आपको fair amount of promotions of opportunities मिलती हैं कि नहीं? In terms of opportunities, honestly, it depends on the leadership. Not just interview दिए हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए भी हैं. You do feel कहीं ना कहीं अलग से, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में खड़े हो and they are talking, वो लोग आपस में बहुत ही ऐसे आराम से अच्छे से बात करेंगे. But when you will be there, they will be a bit more cautious. So hello everyone, today we have Keerti here with 5 years of software engineering experience, who is a woman in technology and she's a top voice on LinkedIn. उनके पास experience है top companies like Intuit, Atlassian, and उन्होंने interview किया हुआ है Amazon, Microsoft and all the top firms that you can think of, and she'll be sharing her experience. How does it feel to be a woman in technology, a girl in technology? काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार if you are applying as a girl to these top companies, आपके interview process easier होते हैं. Is that really true? We will be getting all the insights from her today. So hi Keerti, can you please introduce yourself? Hi, Anu. Thank you so much for having me. Really excited to be here and bring on all your questions. I'm ready to answer as much as possible. थैंक यू कीर्ति फॉर द अपॉर्चुनिटी. माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, जब आप एनआईटी से ग्रेजुएट हुए, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि एनआईटी से ग्रेजुएट होने का मतलब है दैट यू कैन गेट हैंडेड ओवर पैकेजेस इजीली. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आप ग्रेजुएट हुए? हाउ वर द ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स ओवर देयर? Okay, first of all, I don't know if you know this, but मैं NIT में ट्रिपल ई में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, and I was probably one of the only students who wanted to go for software engineering from triple E. And although मेरा placement लग गया था, but I had decided to get into coding very very late. तो मैं NIT से तो मेरा पैकेज 6 LPA का ही लगा था. It was very basic, right? And I learned myself from there. I have learned everything myself. And वहाँ से growth होती गई 2x, 3x, 4x, मतलब 5x. It just kept growing because software engineering, there's so much opportunity if you're good at it, if you really like doing it. So it's not that obviously I got the first push because of NIT, because of the thappa, but it is not like I got to learn so much in NIT because I was not from CS background. एंड जो आपको ग्रोथ मिलती है, जो आपने फर्स्ट कंपनी चूज की जहाँ पे आपको पैकेज मिला, जो आपने बताया, सो आप कह रहे हो 50 to 100% ग्रोथ मिल सकती है एवरी ईयर. व्हाट आई हैव हर्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार कंपनीज में टेक में 10, 20, 30% ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं है पर ईयर. सो हाउ डज दैट हैपन एंड आपने कैसे पॉसिबल किया? Okay, so if you stay within a company, then yeah, the harsh truth is कि mostly 30-40% होता है. अगर आपका बहुत ही long dip promotion है, then maybe growth हो जाएगा. Max to max I've heard is 50%. But when you switch companies, the growth possibility is just so much. I've even heard 200% being possible. मेरा जो first बड़ा break था when I joined Intuit, I had gotten 100% increase. And after Intuit also again, I had gotten 100 or more than that percent increase. So a lot is possible. I have seen people get even 200, 300%. So they, the possibility is just endless. But the harsh truth is कि within a company the growth is limited. क्या आपको पता है whenever you become a software engineer, एक ट्रेनिंग दी जाती है. इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल दे टीच यू दैट आपको अपना डेटा सिक्योर रखना है एट ऑल टाइम्स, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घर में हो. एंड टू डू दैट दे ऑलवेज रिकमेंड यू टू कनेक्ट टू अ VPN. इफ कॉर्पोरेट लाइफ needs to be secured, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी सिक्योर रखनी चाहिए थ्रू अ VPN. एंड माय फेवरेट VPN फॉर दैट इज सर्फशार्क, बिकॉज सर्फशार्क सबसे पहले मुझे सारे के सारे डिवाइसेस, माय फोन, लैपटॉप, आईपैड्स, हर एक से एक सब्सक्रिप्शन साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. प्लस अगर आप एक ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे सर्विसेज ब्लॉक्ड है, फॉर एग्जाम्पल इन UAE, वहाँ पे व्हाट्सएप ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक कर सकते हो थैंक्स टू दिस VPN. एंड आप अनलॉक कर सकते हो मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑफ नेटफ्लिक्स एज वेल, क्योंकि नेटफ्लिक्स UK पे आपको फ्रेंड्स मिलता है पर वो US नहीं मिलता. आपको हॉटस्टार इंडिया में सस्ता मिलता है पर US में बहुत एक्सपेंसिव है. यू कैन गेट थिंग्स फॉर चीपर थैंक्स टू दिस VPN एज वेल. इफ यू विल यूज माय कोड SIGNINUSA, you'll first of all get 3 months free plus 85% of discount. That is less than 200 rupees per month. So definitely check it out and the link will be in the description below. So what inspired you to change? काफ़ी लोग जब एक जगह एक कंपनी में सेटल हो जाते हैं, उनके लिए मूव ऑन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. सो व्हेन डिड इट हैपन कि आपको लगा कि यार आई डिजर्व मोर एंड आई वांट टू लर्न मोर? ऐसी फीलिंग आई, कब आई? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही था कि आई एम फ्रॉम नॉन सेल्स बैकग्राउंड, मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है. सो आई गॉट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ स्टार्टअप आफ्टर माय फर्स्ट कंपनी. सो आई लेफ्ट माय फर्स्ट कंपनी एंड आई जॉइंड अ स्टार्टअप. आई वाज द ओनली एम्प्लॉय. आई वाज डेवलपिंग समथिंग ऑल बाय माई सेल्फ. सो फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, to be able to call myself a software developer who created something by herself, like without any help. It was on a completely new tech stack. I got to learn just so much. So for that opportunity, I left my first company
company. And when I delivered that, I joined into it. It was like that. And into it, when I felt that my growth is being limited, like I don't think I'm getting to learn that much. That is when I decided to move on. So for me, it has never been like I've never been afraid of change, because for me, a lot has been happening always, almost all the time. There's like so much happening. And I'm not really scared of taking like those tough decisions that I need to move on. In fact, I would say that I'm sort of a person who, finds it hard to find a stability, that be happy with what you have. I'm always looking, what else should I learn? What else should I know? What else is there for me, like that? Very nice. So इस दौरान like in this change what kind of technologies you got to work on? काफ़ी लोग सोचते हैं कि they want to fix them. जैसे मैं हूँ, मैंने हमेशा स्टार्ट किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट से, मैं अभी भी एंड्रॉयड कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से लेकर अब तक मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, एंड आई नेवर गॉट बोर्ड. पर आप बताना, लाइक डिड यू गेट बोर्ड विद व्हाट यू स्टार्टेड विद, एंड आप अब किस चीज़ पे काम कर रहे हो? मैं जब भी कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, यू कांट रियली से कि वांट टू डू ओनली दिस अंटिल यू हैव रियली एक्सप्लोर बाकी की चीजें, राइट? तो जैसे फॉर मी, फॉर द फर्स्ट कंपनी दैट आई वाज वर्किंग फॉर, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन बैकएंड, एंड आई यूज्ड टू लव दैट. आई वाज वर्किंग ऑन माइक्रो सर्विसेज, काफी अच्छा काम था. उसके बाद आई रियली वांटेड टू कॉल माई सेल्फ अ फुल स्टैक डेवलपर. सो व्हाट आई डिड, आई got an opportunity to work in front end. So after that, I became a full stack developer. And now from there, I have been very open. I have not worked on just one or two tech stack. I've also worked on like different things. Like I've worked even on C#, Node.js, but my main language is C++, right? एक्सप्लोर करने के बाद आई रियलाइज कि मुझे डेवलपमेंट पसंद है, मुझे C++ या मुझे बैकएंड में मजा आता है. बट वैसे आई एम ओपन टू वर्किंग एनीवेयर, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट आफ्टर वर्किंग आई रियलाइज कि मुझे फ्रंट एंड में उतना मजा नहीं आता. बट आई एम स्टिल अ फुल स्टैक डेवलपर. इट्स अ स्किल दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ. सी व्हेन कंपनीज कम टू हायर मी, दे विल सी कि ऐसा नहीं है कि शी कांट डू फ्रंट एंड development work, right? She is a full stack developer, but she prefers to do back end development, and I consider that as a plus point. So I am not limiting my skill set. मैं ऐसे एक दो companies में नहीं, बल्कि I can be working in any company because I'm open to the tech. Got it. And आप अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हो? So front end may I've used Flutter the most, and back end may I've used C++ the most, but I also use Java. I've also worked a bit on Android. I've worked a bit on Node.js, C#, .NET. So it varies, yeah. Wow, that shows the amount of exposure you have. Now let's talk about the interviews. The first interview से लेकर from your college till all the interviews you have taken in the last 5 years, आपको क्या लगता है? Do women have advantage in tech over interviews? जितने भी आपने interviews दिए, आपको लगता है कि आपको interview easier पूछे गए questions as compared to someone who is male? नॉट जस्ट इंटरव्यू दिए हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए भी हैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशली इन इंटरव्यू मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं. एंड आई कैन अश्योर यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि विमेन के लिए कोई भी आसान क्वेश्चन हो. नेवर हैपेंड, नेवर. इट इज जस्ट, it's not true. It is just not true. See, in terms of interview, I can assure that women could be get more opportunities, which I think both of us and everyone will agree that we need to some extent. Maybe we can discuss that more. Maybe opportunity ज़्यादा मिलती है, maybe push ज़्यादा मिलता है, and working का थोड़ा सा feel अलग होता है. That is for sure, and I can talk about that as well. But when it comes to the tech knowledge that you need, the skills that you need, the difficulty level, it is all the same. So in terms of अगर आप अपने 5 साल की इंटरव्यूज एक्सपीरियंस बताओगे, ऑल यू हैव टेकन इन माइक्रोसॉफ्ट गूगल, आपको कहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू लगी एंड वाई? सबसे ज्यादा मजा मुझे एटलासियन के इंटरव्यूज में आया था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक proper DSA interview. It was like a mixed, they actually gave you a problem and you had to solve it sort of interview where you were using your DSA knowledge. So I really liked those interviews. In terms of toughness, I think Google expects way too much from you. I think they expect, कि you should be exactly to the point. बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो भी दिक्कत होती है, कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया तो भी दिक्कत होती है. आई थिंक दे आर वे टू पर्टिकुलर. आई डोंट थिंक दे शुड बी दैट पर्टिकुलर. अगर एक आध छोटी चीज गलती हो सकती है या एक आध इंटरव्यू थोड़ा सा मैसअप हो सकता है, बट आई पर्सनली थिंक दैट दे आर टू पर्टिकुलर. आई नो सम पीपल माइट फील दैट इसको आता नहीं है इसलिए ऐसा करिए, बट ऐसा नहीं है. मैंने बहुत इंटरव्यू क्रैक किए हैं, एटलासियन, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, बट आई पर्सनली थिंक कि इंटरव्यूज कैन गो रॉन्ग. यू माइट बी हैविंग अ बैड डे या एक चीज उस टाइम पे क्लिक नहीं करती है. आई थिंक कि गूगल कैन बी अ बिट बेटर इन दैट सेंस.
या आई टोटली एग्री, क्योंकि गूगल के क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं वो लीड कोड से एग्जैक्ट कॉपी बहुत कम केसेस में होते हैं. दे ट्राई टू कम अप विद द यूनिक क्वेश्चंस एज पॉसिबल. एंड उनके क्वेश्चंस के लिए आपको रियल लाइफ चीज़ों से रिलेट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बेस्ड ऑन रियल लाइफ को कोडिंग से कनेक्ट करने में मुझे कभी कभी दिक्कत आ रही थी. तो इस कारण दे आर द वंस हु मेक यू थिंक रियली हार्ड. एंड The interesting thing is that system design is actually more close to the real life world, right? And if you see in Google, you don't get asked system design, at least like if you have till 8, 10 years of experience, they ask only DSA. And now the another question that can come up is कि हम DSA use ही कितना करते हैं, you know, general development में. So it's an endless conversation that we have. But the point is that every company has its own process and its own pros and cons. We can't really judge them. It is what it is. We just have to accept it, right? So एंड आपने जैसे बोला कि एज अ वुमेन फील अलग होती है, सो हाउ डज इट फील टू बी अ वुमेन इन टेक्नोलॉजी? आपको फेयर अमाउंट ऑफ प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि नहीं, एंड हाउ डज इट फील ओवरऑल? see, in terms of opportunities, honestly, it depends on the leadership, right? So sometimes it's very equal, sometimes it can be a bit biased. It depends from person to person. But honestly, in terms of working, there are a few differences. Because when you see that, you know, in a group of like 10 people, 2, 3 people are a bit different, you know, because obviously the ratio of women is always less. You do feel कहीं ना कहीं अलग से, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में खड़े हो एंड दे आर टॉकिंग, वो लोग आपस में बहुत ही ऐसे, यू नो, आराम से अच्छे से बात करेंगे. बट व्हेन यू विल बी देयर, दे विल बी अ बिट मोर कॉशियस बिफोर टॉकिंग टू यू, कि पॉश एक्ट लग जाएगा, यू नो, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करनी है. वेयर एज अगर वो केवल लड़कों के साथ है तो उनका अपना मस्ती मजाक चलता रहेगा. इट विल बी ऑन डिफरेंट लेवल, right? Similarly, the other thing that I keep talking about is that, you know, women are asked to leave offices earlier than men in most of the offices. कि, you know, there is a restriction कि आप 7 बजे 8 बजे निकल जाओ ऑफिस से, क्योंकि it is not safe. Then the responsibility will come on the office. बहुत सारे ऑफिसेज में they send security guards to drop you off at home, जबकि उनको मेन को नहीं भेजना पड़ता छोड़ने के लिए. तो it sort of becomes a liability कि, you know, आपको ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो, you know, it will come on you. तो always you feel a bit different, but when it comes to again your technical skills and all, it is completely same. It is just about how thoughtful your leadership and your team is. Like in Intuit and in Atlassian, I have never felt like that, because the team is just awesome. Like they are very, very understanding. They understand that you need to respect women. They're really good at their work, so they will treat me as equal. But I have heard of very toxic work cultures also, like where women are treated like liability. So होता है, it depends from team to team, from company to company, from leadership to leadership. आई टोटली एग्री. मैंने ये कभी सुना नहीं था, बिकॉज इन द यूएस लाइक वुमेन एंड मेन के लिए सेफ होता है, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार में जाओ खुद जाओ, तो ऐसा मैंने सुना नहीं था. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू लर्न अबाउट इट. एंड आपको ये भी लगता है कि बीइंग वुमेन आपको लाइक फायर करने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैन? ऐसा नहीं होता ना? कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेल और फीमेल की रेशो मेंटेन करने के लिए कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है कि हमारे पास 35% फीमेल है, और वो ऐसा करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. इफ यू आर नॉट गुड एट योर वर्क, व्हाई विल द कंपनी वांट टू पे यू? इन द एंड उनको अपना बिजनेस चलाना है. दे वांट टू हैव लाइक मोर फ्रूटफुल पीपल. व्हाई विल दे स्पेंड ऐसे जेंडर रेशियो बेटर करके? दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, राइट? इट्स नॉट लाइक कोई आपको आके पैसे दे रहा है उस चीज के लिए कि वो आपका जेंडर रेशियो बहुत अच्छा है, आपको पैसे मिलेंगे. ऐसा नहीं है. एवरी बिजनेस वांट्स टू हैव लाइक फ्रूटफुल पीपल, यू नो, जो प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं, जो अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं. दे वांट दोस पीपल. और नो कंपनी इज गोना हैव अ, यू नो, पर्सन हु इज नॉट गुड एट द वर्क एंड, यू नो, हम तो पैसे देंगे क्योंकि हमें जेंडर इक्वालिटी अच्छी करनी है. आई डोंट थिंक सो. Awesome. एंड आपने जितने भी कंपनीज में काम किया, इफ यू फील कंफर्टेबल, कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस यू हैव एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग एनी नेम्स? आपके लिए एक आइडियल वर्क लाइफ बैलेंस सिनेरियो कैसा होगा? एंड अ ड्रीम पैकेज नहीं, ड्रीम वर्क लाइफ बैलेंस. Honestly, I have been very lucky to work in like Intuit and Atlassian, and both the companies have had like absolutely great work-life balance. And that was one of the major reasons where when, you know, I was a bit paranoid about joining, like although I had offers from Amazon, Uber, because the work culture depends on the teams over there. Some teams can have like very hectic work and you might not have like that good work-life balance. For me, good work-life balance means that, you know, if you want to take a leave, you can take a leave that day. If your personal life demands that, you can take a leave. If you need to walk out for an hour,
you can walk out after telling a manager. You should not be answerable. If you want to work at night instead of working in the morning, you should be able to do that. You should, like, your manager should not be asking you why are you not available exactly at this point. No one should be micromanaging you. If you're able to work at your own pace, if you're able to deliver the work, it should be fine by the company. That is my definition of good work life balance. The expectation from the employee should be to deliver the work and not be present for this much time to this much time. That is good work life balance. एब्सोल्युटली, आई ऑल्सो एग्री. एंड मैंने कभी सुना नहीं था कि इंडिया में भी ऐसा होना शुरू हो गया. आई एम रियली अमेज टू सी कि मेरे दोस्त मुझे इंडिया में कहते हैं कि सेम पैकेजेस जो यूएस में मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, सेम वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, बिकॉज नाउ द एक्सपेक्टेशन इज टू डिलीवर एज कम्पेयर टू कि 9 to 5 हमें विजिबिलिटी चाहिए टू सी इन द ऑफिस, एंड दिस रिमोट कल्चर हैज हेल्प्ड. या Even in good companies like, Amazon, Uber, which are actually known for, having very hectic work, I've heard from people that some teams have like great work-life balance. So it actually depends from team to team. But a lot of companies are realizing it, because there are so many good software developers that if you don't treat them well, they're just going to move out of the company and go to another company. They have good enough job offers, they have good enough level of opportunities to just walk out of the company. So if you don't treat your employees well, they're going to go. टोटली. एंड स्पेशली इन अ सिटी लाइक बैंगलोर जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, उनके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट लाइक इन सिलिकॉन वैली इन यूएस. Exactly. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चंस अबाउट पैकेजेस. अभी जो सेम पैकेजेस यूएस में पॉपुलर होते थे 1 crore के, वो इंडिया में भी पॉसिबल है, एज यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट कि 1 crore पैकेज लोग सोचते थे कि इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनल पैकेजेस में ही पॉसिबल हो सकता था, बट यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, टेकिंग 1 crore प्लस पैकेज. अगर आप किसी स्टूडेंट को बताना चाहोगे जो अभी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, व्हाट विल बी द स्टेप्स टू गेट 1 crore पैकेज इन इंडिया इटसेल्फ? See, honestly, instead of focusing on the money, the moment you start working on the skills, the money follows in India or in anywhere, or in any place. Now, in fact, when I think about it, it is not like I don't or I cannot get offers outside India. The fact is, say, a lot of people get offers from London, from US, right? But what happens? The expenditure over there is also more. You end up spending more, and you don't save as much as you would probably save in India. The difference in the amount of money is probably less, and especially the fact that COVID has made us realize that how important it is to stay with the family, to stay with your close ones. I think more and more people want to explore the opportunities in India, at least right now, according to me, especially with all the things that are happening outside India, the economical crisis, and we all know about what all is going on, right? Other than that, for the steps, I would say that focus on the skills. Rest, everything really follows. Har saal there are like lakhs and lakhs of engineers, right, coming out of colleges. And how do you make sure that you are among the top people? The fact is that still there is a huge gap between what students are offering and what companies are expecting for. Abhi bhi when I take interviews, when companies are looking to hire people, we take so many interviews just to hire one person, because we are unable to find people who have that skill set, right? So people are not really learning up to that level. The moment you develop your skills, there will be so many companies who would want to work with you, because there are very less good skilled software developers. There are so many software developers, but the percentage of people who are really, really good at their work is very less. That's a wonderful advice. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि it's also important to look out outside of a company जो आपने किया. Like अगर लोग अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ही कंपनी में ढूंढेंगे, फिर भी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. यू हैव टू लुक आउट एंड यू शुड नो योर मार्केट वैल्यू. एंड इफ़ यू विल नॉट नो, इवन कंपनीज तो क्या करेंगे, अगर आपको हर साल 10% हाइक करते करते दे विल बी कीप डूइंग दैट, एंड आप उन्हें बताओगे नहीं, दे विल नॉट इवन कम अप विद अ बेटर ऑफर. सो ये करना ही पड़ेगा. दिस इज द ओनली वे. I was just saying that if you let people walk over you, people will walk over you. Obviously, people are going to take advantage of you. You are supposed to know your market value. You're supposed to know how to sell yourself. If you can't do that, there's no one who's going to come and tell you that you know what you deserve to earn better. एंड माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इंडिया से अब्रॉड में ऑफर्स बहुत मिलते हैं, फॉरेन पैकेजेस मिलते रहते हैं. सो हाउ कैन स्टूडेंट थिंक अबाउट लिविंग इन इंडिया, क्योंकि आप अभी भी इंडिया में काम कर रहे हो. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन इंडिया जो लोग सोचते ही नहीं है, एंड दे आर लिविंग दैट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू गो अब्रॉड?
See, honestly, according to me, there is no one right thing to do. It is okay to be working in, outside India or in India. Both the things work fine. It is just that people have different priorities at different point of time. Like I'm working in India right now. I might be working outside India later, or I might choose to stay here. So my priorities may vary in my life, and the same should be applicable for everyone. For someone जिसके like parents India में है, जिनको उनका ध्यान रखना है, कुछ responsibility है इंडिया में, it makes sense कि आप इंडिया में रह के उनका ध्यान रखो, right? But for someone who can prioritize their career, who want to experience different things, can go and work outside India. See, the fact right now is that your work doesn't change that much whether in India or outside India. The work that you do and the work that I do is very similar. It is just team dependent, right? The team, like a part of my team sits in Turkey right now, and they and I are doing exactly same thing. So the kind of work that we'll be doing is same. It depends that in personal life, what do you prefer? Do you want to experience the world outside India, or do you want to stay close to where you were born, or do you want to just be here? So really, work wise, it is not going to bring that much change. It is just about your personal choices, and monetary wise also the difference might not be that much, given that we are also skilled. If you're not skilled, then your money might vary a lot, but if you're good at your work, then the money might not be such a big factor. Your personal life will be a much bigger factor. So if I have stayed in India till now, it is because of the COVID. And if I decide to go outside India, I know it will not be a permanent decision, because I want to come back and stay with my parents. So that's a personal decision that I've taken. And similarly, people can decide to move with their parents outside, so it depends on that. So thank you so much, Keerti, for sharing. I respect your opinion, and आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. And thank you so much for your time. I hope students watching also can learn how to actually grow as a software engineer. And I'll have your channel and your social media accounts in the description below. Thank you so much, Keerti. Thank you so much for having me. It was a great experience. I hope your audience likes my content also. And I hope to collaborate more with you, to work with you more. You're doing wonderful job. So it's my pleasure to be here. Yes, surely. And we will have our other collaborative videos in the description as well. Thank you so much for the opportunity. I just wanna be your Superman.